Hello everyone, very good morning to all of you. This is Samrat Sir Mishra and I welcome you to Unacademy, the largest e-learning platform in India. Dear students, today's topic of discussion is agriculture. So basically agriculture belongs to your geography syllabus as well as it belongs to also your economic syllabus. And I'll give you the brief prospect and the aspect of economic view of the agriculture. Economy अनुसार हम agriculture रे कौन जानिबा दरकार with respect to your examination exam point of view को factor को हमें ध्यान रखा दरकार एवं को factor को पढ़वा दरकार ये सब ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. So before going into the deep concepts of the topic, let's have a brief discussion regarding the agriculture. समझते इकोनॉमी नो तीन सेक्टर ऊपर जानते हो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर एंड एग्रीकल्चर बिलोंग्स टू द प्राइमरी सेक्टर एंड द इंडियन इकोनॉमी इट इज मेनी टाइम्स known as the agrarian economy because maximum of the workforce in India they belong to the agriculture sector. And agriculture plays a very vital role in the India's economy. Approximately 54.6% of the total workforce of the country they are engaged in the agriculture and the allied agricultural activities. This report I am giving you with respect to the census 2011. And देखो 54.6% is workforce they are involved in the agriculture sector and this sector accounts for 16.5% of the country's total gross value added for the year 2019-20 at the current price. तो एठी मार्क करि पड़थवे कि 54% approximately workforce involved in agriculture whereas to the GDP or to the GVA the contribution is only 16.5%. So this is the land use statistics according to 2014 and 15 financial year data. The total geographical area of the country is 328.7 million hectares, out of which 140.1 million hectare is reported the net sown area. There is a difference between the net sown area and the gross cropped area. Let's understand it one by one. Net sown area कहले कोन बुझंती माननंतु गोटे रीजन अछि जति कि जमी अछि हम पाखरे आमे सेठी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करचंती गोटे जमी को आमे बारंबार एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करंती डिफरेंट क्रॉप सेटू डिफरेंट क्रॉप को प्रोड्यूस करंती जानथिबे प्रथमे धान हैला धान परे मुग बा बिरी हैला देन आउ किछि वेजिटेबल्स हैला सो डिफरेंट फेज रे डिफरेंट सीजन अनुसार आमे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को हार्वेस्ट करथांती गोटे जमी को तीन थर चाष कले भी आमे ताको गोटे थर हिसाब करबा ताको हम हिसाब करबा कोथरे ना नेट सोन एरिया रे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया रे कोन होबो मानिनंतु गोटे हेक्टर जमी बट गोटे ईयर रे ताको हम तीनटा सेशन रे सेठी चाष करचंती तीनटा सेशन हम एग्रीकल्चर करचंती तो ताको से गोटे सेम जमी को हम तीन थर हिसाब करबा ग्रॉस रे नेट रे गोटे जमी को गोटे थर हिसाब करबा जेते थर भी सेठी प्रोडक्शन हेताओ. So in India, the net sown area is 43% of the total geographical area. Total area of 43% net sown area हिसाब रे utilized करा जाए. So this is the GVA, gross value added. The data I have given it is related to the GVA in the agriculture and the allied agriculture sector, and the share in the total GVA of the country at the current price during the last 5 years. Last 5 years रो डाटा मिटे देछि. So 2014 15 15 16 एट जदि देखिबे परसेंटेज इंक्रीज तो होउछि जदि एग्जैक्ट अमाउंट देखिबे then 14 15 15 16 को इंक्रीज होइछि then 16 ने इंक्रीज 17 ने इंक्रीज 18 19 सब ती इंक्रीज होई चालछि बट परसेंटेज जदि देखिबे परसेंटेज टू द टोटल जीवीए ये टिके डिक्रीज करछि 14 और 15 रु 15 16 को कोंतु बा 16 16 17 नु 17 18 को कोंतु एठी टिके डिक्रीज करूछि. नेक्स्ट हम रीजनल वेरिएशन देखिबा इन द एग्रीकल्चरल ग्रोथ रे डिफरेंट स्टेट मान को ऊपर जदि हम डिस्कस करिबा डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया सेमानकर रीजनल ग्रोथ इज कंप्लीटली डिफरेंट. देयर आर सम स्टेट्स where you will be finding more growth in case of agriculture. The states like Punjab, the states like Haryana, ये सब जगह रे agriculture तमिलनाडु आंध्र प्रदेश there are some states जोटी ग्रोथ अधिक हुए whereas some states जोटी मीडियम ग्रोथ and some states जोटी एग्रीकल्चर को इंपोर्टेंस दिया जाय नाही. तो हम गोटे पर गोटे स्टेट्स देखिबा एनालाइज करिबा the share of the agriculture and allied activities in the gross state value added 30% and above 30% अच्छी तीनटा स्टेट रे मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश these three are the best performing states in terms of agriculture. Then 20 to 29% of the state GVA को ऐड करछन्ते पंजाब उत्तर प्रदेश राजस्थान बिहार एंड ओडिशा. सो एमानन को हमें सेकंड कैटेगरी रे रखि परिबा. थर्ड कैटेगरी रे आछन्ती हरियाणा मेघालय छत्तीसगढ़ तेलंगाना गुजरात एंड झारखंड जोटी 15 to 19% एमाने
state gross value added को add करिथांती and rest of the states they add only less than 15% to the GSBA and these states are Himachal, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and other states as well. So it is regional variation देखुचंदी different state ପାଇଁ different अछि एटी different हमारा region कौन यदि हम वेरिएशन देखिबा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कोन पे एटी वेरिएशन होची देयर आर मेनी फैक्टर्स द फर्स्ट फैक्टर जहा को इंपोर्टेंस देबी दैट इज द जियोग्राफिकल फैक्टर corresponds to or refers to the first it is related to the input. Agriculture is a natural activity and for the natural activity we need different type of inputs. The first and the most important input in this regard is a fertile soil. फर्टाइल सॉइल अधिक हेले हम पाखरे इजिली हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बा हम कहि परिबा कि आउटपुट हम पाखो अधिक आसी परिबो फर्स्ट पॉइंट द सेकंड इज द इरिगेशन दीटा वे करा जाय परिबो नेचुरल वे ऑफ इरिगेशन जोठी हम रिवर यूज करि परिबा रिवर वाटर को यूज करि परिबा कैनल को यूज करि परिबा एंड देयर इज आर्टिफिशियल वे ऑफ इरिगेशन एज वेल जेमती मोटर पंप लगे कि हम इरिगेशन करि परिबा डिफरेंट वर्तमान मॉडर्न फॉर्म ऑफ द इरिगेशन आसलानी ड्रिप टेक्नोलॉजी ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटीज स्प्रिंकलर इरिगेशन फैसिलिटीज ये सब भी अछि किंतु जदि हमें बेसिक इनपुट देखिबा एग्रीकल्चर पई डेफिनेटली फर्स्ट विल बी अ फर्टाइल सॉइल एंड द सेकंड वन विल बी द इरिगेशन ए जो स्टेट देखुचंदी ए स्टेट मानकरे ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस अधिक करूची दे हैव फर्टाइल सॉइल दे हैव प्लेन रीजन दैट इज व्हाई माने अधिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करि परछंती बा स्टेट ग्रॉस वैल्यू एडेड को अधिक ऐड करि परछंती दिस इज द फर्स्ट थिंग द सेकंड थिंग इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी देखंतु जो ग्रीन रेवोल्यूशन आसिला इट वाज द रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज limited to certain regions only. ये एंटायर इंडिया रे मु कहि परिबनी कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ पैन इंडिया कांसेप्ट थ्रू आउट इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन एस्टैब्लिश हे नथिला किछि किछि रीजन ने ग्रीन रेवोल्यूशन हेतिला आ किछि किछि रीजन ने ये सक्सेसफुल हे पारि नथिला या पे डिफरेंट फैक्टर अछि ग्रीन रेवोल्यूशन डिस्कस कला बेले ता ऊपर मु डिस्कशन करिवि बट वर्तमान हम देखिबा पॉलिसी भी इंपैक्ट पकाए अपन द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन और अपन द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट गोटे फील्ड रु केते आउटपुट आसीबो टोटल या ऊपर भी पॉलिसी इनपुट पकई थाए सेकंड फैक्टर द थर्ड फैक्टर इज द परसेप्शन ऑफ द पीपल हाउ द परसेप्शन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर नाउअडेज द यूथ द यंग मास दोज who are the real workforce of the country they are never interested they are not inclined they are not showing their interest towards agriculture rather they are interested what for they are interested to get a white collar job. So agriculture is जदि हमें कहि परिबा समरी नहीं परिबा कि agriculture is not the field of interest for the youths or for the entrepreneurs as well जेमति देखुतबे टेक्नोलॉजी फील्ड रे एंटरप्रेन्योर ये इंक्रीज करी करी चालुचंती एंड डेली बेसिस टेक्नोलॉजी रे कोंतु ई बिजनेस रे कोंतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे कोंतु बिजनेस बढ़ी बढ़ी चलीची बट एग्रीकल्चर सेक्टर को अडॉप्ट करिबा एक्सेप्ट करिबा इंप्लीमेंट करिबा बा एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करिया पई ना यूथ मास अधिक इंटरेस्टेड अछंती ना एंटरप्रेन्योर माने अधिक इंटरेस्टेड अछंती. So this is all about the perception of the people कि लोक माने गोटे पर्टिकुलर काम को को हिसाब रे देखुचंती जे पर्यंत हम एग्रीकल्चर को until and unless we see agriculture as a symbol of forwardness symbol of development से पर्यंत एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हे परिबने बिकॉज़ ए पर्यंत हमें भाबुचंती कि एग्रीकल्चर इज अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस एग्रीकल्चर जो माने प्रैक्टिस करछन दे आर प्रिमिटिव दे आर नॉट मॉडर्नाइज्ड दे आर नॉट सिविलाइज्ड दे आर नॉट टेक्नोलॉजी ड्रिवन so semane cultural traditional way agriculture practice but that is not the case in today's time period you will finding I can give you hundred and thousands of examples where there are many young entrepreneurs in the field of agriculture they quit their job they are working in the field of agriculture practicing allied agriculture poultry farming goatries and other forms of agriculture they are earning more than 3 lakhs per month and they have also given employment facilities to 20 to 30 people in their farm. The first, they are generating their own income. The second benefit is they are being self-reliant. The third benefit is they don't need to go to any other place to work there in any unhygienic condition. The fourth and the most important factor is in the economy. They are contributing to the economy as well. They are generating some income. They are providing employment. So employment facility is being increasing in the state itself. So you can you can know about those entrepreneurs just Google it or in the YouTube also you're finding where the video of their farm is also available. So my basic objective in this regard is or what I am trying to say is the perception of the people towards the agriculture or they consider agriculture as a symbol of backwardness that is why they are not interested towards the field of agriculture. So what we need in this case is we need to promote agriculture.
हमको एग्रीकल्चर को प्रमोट करिया को पड़िबो यंग एंटरप्रेन्योर मान को इनक्लाइन करिया को पड़िबो एग्रीकल्चर आड़ को साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करिया को पड़िबो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एकेडमिक्स को हमें इन्फ्लुएंस करि परिबा जेम बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर एंड अलाइड एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड को हमें प्रमोट करि परिबा हमें यंग स्टार मान को स्टूडेंट मान को एनकरेज करि परिबा एग्रीकल्चर को एज अ स्ट्रीम टू ऑप्ट फॉर एंड द सेकंड इज मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट providing assistance, financial assistance to the research scholars, those who are pursuing their R&D in the field of agriculture. That will be beneficial as well, so that people will be more interested towards the R&D in the field of agriculture. This is a graph which shows the state-wise growth and share in the agriculture. This data is related to the 2016-17 financial year. Here you will be finding there are many states. There are states like Madhya Pradesh, the states like Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, their graph is quite high. It is both ଭଲ performance ସେମାନେ ଦେଖଉଛନ୍ତି, whereas some states जोटी negative growth आपण देखिବାକୁ पाइबे बा बहुत कम influence देखिବାକୁ पाइबे agriculture sector रा. Next we will discuss about the significance of the agriculture sector. There are different significance. This can be a good question. This is a potential question for your mains examination. So let's understand what are the significance of the agriculture sector. First I will discuss about the let's talk about the political significance of the agriculture sector. See, agriculture is not an universal phenomenon, and the output, the result of the agriculture sector, the people that are involved in the agriculture sector, the way in which they practice agriculture, it is completely different from one place to another place. The way of practicing agriculture in Jammu and Kashmir or in Punjab and Haryana is completely different from the way of practicing agriculture in eastern states like West Bengal, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand. So, there are different regional issues associated with agriculture, because agriculture itself is a regional phenomenon. Because India is such a vast country, the geographical location of India, Tropic of Cancer, approximately halves the country. It divides the country into two parts, northern part and the southern part. So different geographical factor pai hame koi pariba ki agriculture sector different region ne India re different state re but different region ne different type of practice kara jai thai. So automatically there will be different regional issues, and regional issue means that will lead to politics, politicization of the agricultural issues, because in today's time period politicians what they need an issue to discuss and to exaggerate the issue, to make to attract TRP towards their political party. This is their basic function, this is their basic objective. So political significance hame thoda agriculture sector discuss karanti. At that point of time we need to discuss ki फार्मर मानकर इश्यूज को लेके समान हाईलाइट करिवे, ताको लेके समान राजरास्ता को ओल्हेबे बा गवर्नमेंट अगेंस्ट रे हड़ताल स्ट्राइक करियो को स्टार्ट करिवे, सो दैट इट कोन हबो द डिमांड विल बी, देयर विल बी डिमांड फॉर द लोन वेवर. सी दिस लोन वेवर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेनन, because the why loan waiver is required. This is we can talk that we can say that the loan waiving process is a process of appeasement. The government tries to please the farmer society, tries to please the farmer section, because see in India we have a democratic form of government, and democracy is all about the game of numbers. More the number, more the majority, the democracy will win, the political party will win. So that they will never neglect the agriculture sector, or they may neglect the sector, but they will never neglect the farmers, because the farmers are the big contributor to the vote bank. So for the purpose of vote bank politics, the politicians or the government, they will interfere in the matter of waiving the loan, because it is pressure पड़ुची by different activists, agricultural activists जो माने अछंती, rights activists जो माने अछंती, environmental activists अछंती, सेमान तो pressure पकेबे गवर्नमेंट ऊपर कि गवर्नमेंट एटी लोन वेवर करू, लोन छाड़ी दिया जाऊ, then गवर्नमेंट एटी बाध्य है कि लोन वेवर करियो. लोन वेवर कले there is some problem associated with waiving of the loan. The first is the economic burden upon the government, and this will increase the fiscal deficit. ये गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज करियो, whereas it will decrease the ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करियो, whereas रेवेन्यू हम पाकर सेति के नहीं एक्सपेंडिचर को मीट करिया पाई. So the gap between the revenue and the expenditure of the government, that will increase. So जहाँ को हमें कही परियो कि it will create fiscal deficit, बा it will create a burden upon the government of India. The government is already overburdened with many responsibility,
And now through the process of loan waiving, we are creating two type of problem. One is the political instability, and the second is more economic responsibility or more financial burden upon the government. So automatically the government in the near future is going to be overburdened with the issue of loan waiving with respect to vote bank politics or to appease the farmer community. So this is the political significance of agriculture. This I discussed about the domestic political significance. I can also discuss about the international political significance. Domestic political significance टा मैं discuss कले. International angle जो discuss करिबा in 1950s, 60s, 17 within that period of time, the first, second, third, fourth, fifth, even up to 6, 7 financial 5-year plan को अपन पढ़िबे, then सेठी देखि परिबे कि there are some issues which are associated with food insecurity in India. For that purpose, India was importing food grains from foreign countries. And during that time period, India had a very negative image throughout the world. That is the begging bowl image. That is the begging bowl image. India was begging food grains from other countries. And the developed countries or the food surplus countries, they have tried to exploit the situation. Many countries that denied India to export food grains. So for that purpose, from that point of time, India started growing its agricultural sector. And nowadays, India is agriculturally, it is a surplus country. And also we are practicing export-led agriculture. We are producing agricultural produces and we are exporting them to those foreign countries. So the negative image of India, it has completely vanished. From a food or the food scarce country, India become a food surplus country. So this is the political significance of the agriculture sector. Now let's discuss about the social significance of the agriculture sector. I have already discussed, according to 2011 census, 54% of the workforce they involved in the agriculture sector. If the percentage contribution of the agriculture sector to the total GDP or to the GVA, if it will be less, then definitely it will lead to less per capita income. Less per capita income of the maximum or the majority of the society. What does that signify? That signifies they have to live below poverty line. So माने BPL under below poverty line आसीजिबे जो मानको पाखरे income per capita income कम अछि. So automatically it will lead to absolute poverty. So absolute poverty is also the cause for less expenditure in the field of health and nutrition, less expenditure in the field of education as well. जेतबेला हम education and healthcare facilities रे expenditure कम करंती, that will lead to less human capital formation. Qualitative human capital formation करिया पई हमको तीटा factor most important. The first is the education and the skill, and the second one is the healthcare facilities. जेतबेला healthcare facilities and education facilities हमको कम ही चलिबो, automatically यार negative point human capital formation ऊपर आसीबो. The next social issues associated with the agriculture sector is migration. People are migrating, farmers are migrating. Why they are migrating? Because they have a perception. If they will migrate from the rural zone to the urban region, then their standard of living will increase. तो सेमानक मन रहुछि कि इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कोंतु बा सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कोंतु, they are more fascinated towards what? Towards the developed societies, towards the urban regions. Urban regional service centers, school, colleges, universities, educational institutions, healthcare facilities, medicals, entertainment, recreational facilities, shopping malls, all those things acts as the point of attraction for those who are residing in the rural region. जो माने रूरल रे रहउचंती बा जो माने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करचंती से माने बाध्य होय कि बर्तन माइग्रेट करिवे. कोन पई माइग्रेट करिवे ना? फर्स्ट से मानकर इनकम जनरेट जति के दरकार to earn bread and butter for their family. They are not being capable enough to generate those assets. So that is why they are migrating from the rural region to the urban region. Rural to urban region को migration करछन, and it is a quite well known fact. There are many negative impact of the migration as well. Migration भी बहुत negative impact ए जगह अछि. जेमति कि हमें कहबा कि per capita resource availability कम हे, जो गोटे region resource तो fix, but जेतबेले माइग्रेशन हे जिवो से रीजन पॉपुलेशन बढ़ि जिवो. सो पर कैपिटा रिसोर्स अवेलेबिलिटी डिक्रीज हे जिवो. दैट विल लीड टू लेस फ्रीडम, दैट विल लीड टू लेस डेवलपमेंट. सो ये सब माइग्रेशन रिलेटेड. माइग्रेशन आहुरी भी अनेक इश्यूज अछि, ताको माइग्रेशन डिस्कशन कला बेले करबा. बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू शुड ओनली नो दैट माइग्रेशन इज द सोशल प्रॉब्लम व्हिच इज एसोसिएटेड विथ द एग्रीकल्चर सेक्टर.
So in the social issues, what I have discussed, I discussed related to poverty, for how poverty leads to migration, and this may also lead to suicide, farmer suicide. It may also lead to farmer suicide. कौन पाई ना जहाँ से इनकम कम होगा, लोन वेवर ही परिबनी, लोन वेवर न होची, बट जदि ऑर्गेनाइजेशनल सोर्स रु से माने लोन आनी चंदी, इंस्टीट्यूशनल सोर्स रु लोन आनी चंदी, गवर्नमेंट सोर्स रु, देन लोन वेवर ही परिबो. बट जदि इटा नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोर्स रु अछि, मनी लेंडर थ्रू अछि, तो मनी लेंडर ठुले ताको they need to repay that. If someone repayment na kari paranti, then due to the financial burden there will be mental instability, which in the near future may lead to suicide, farmer suicide. And farmer suicide is a curse for the nation, because the person who is harvesting, who is providing food to the entire nation, if that person is committing suicide, then this is a fact to be ashamed of. So these are the social relevance significance of the agriculture sector. Now let's discuss the economic significance. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कले कि 54% दे इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. सो जदि 54 जदि एग्रीकल्चर सेक्टर आउटपुट ही कम हो जिवो, इनकम ही 54% पीपल कम हो जिवो, सो डेफिनेटली दे नीड टू लिव इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज अच्छी एटी, बट द एम्प्लॉयमेंट इज द it is जो type of unemployment you are finding in the agriculture sector is disguised unemployment. In the disguised unemployment there is marginal productivity is zero. 10टा लोक जेतिकी काम करथिले 15टा लोक सेतिकी काम करियो. It means the rest 5% that you have added to the workforce, they are doing nothing. The workforce, the marginal productivity of the 5% is completely zero. So it is disguised unemployment dekha jay, which is again a problem of which is a economic problem. The next is employment facilities due to disguised unemployment create करछि हमें डिस्कशन कले. The next is इकोनॉमिक एक्टिविटीज रे हमें देख परबा कि एक्सपोर्ट लेड एग्रीकल्चर जोटा इंडिया वर्तमान प्रैक्टिस करछि. सो जदि हम एक्सपोर्ट लेड एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर करि परिबा, कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन करि परिबा, एक्सपोर्ट अधिक करि परिबा, देन डेफिनेटली हम पाखरे नेशनल इनकम अधिक हो, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अधिक हो. या सहित बैंक लिंकेज जो सब्सिडी पाई डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करछि, तार बैंक सहित हम जो लिंकेज करथुन डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दैट विल लीड टू लेस करप्शन, that will lead to less corruption. Again, the economic significance of the agriculture is urbanization, means rural region को urbanize करिया को हमें agriculture sector develop हेले धीरे धीरे rural region भी develop हो, बा rural region urban region आड़ को transit करिया को try करियो. So these are the economic significance of agriculture. The next is the technology sector. See, technology is such a factor which acts in the each and every step of agriculture. The first step of agriculture is the input. In the input, you have seeds, you have irrigation facilities. You need to prepare the soil, and then the second phase, जो समय हमें plantation कर दी चंदी, and we need to take care of those plants. Then is the harvesting. After harvesting, there is the storage or storage करिया बाद ताकू we need to produce those things in the market. So ये जो जितने step मैं कहली, in each and every step you will be finding there is relevance of the technology. Let's talk about the input sector, giving the very small example of the seeds. So input रे हमें को type of technology को use करी परिबा. The first technology we can use is the chemical technology. Fertilizers पाई, pesticides पाई, insecticides पाई हमको chemical technology use करिया पड़ियो. The second is the mechanical technology. मेकानिकल टेक्नोलॉजी रे हमें ट्रैक्टर, पावर टिलर, हार्वेस्टर, कटर ये सब को यूज करंती एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करिया पई. द थर्ड इज द बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी रे हमें हाई यील्ड वैरायटी रो सीड्स को यूज करचंती, बर्तन जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज करचंती. सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. द फोर्थ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. व्हाई यूजिंग आईसीटी? Why using information and communication technology? To gather information. Let's say कि in the near future there is any natural calamity going to happen, so that the farmer पाखरे जदि हम information पहुंची पारुचंती, so that the farmer will prepare accordingly. से सही हिसाब रे निजे prepare ही जिवो कि कोन ताको करिवा दरकार and कोन ताको न करिवा दरकार. सो ये टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट रे हमको आईटी बा आईसीटी को यूज करिया को पड़े. सो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी को हम यूज करंती इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. जदि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर देखिबा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रे टेक्नोलॉजी रो व्यवहार बहुत अधिक होता है. इन द सेम वे स्टोरेज करिया पई भी हमको टेक्नोलॉजी दरकार. ई नाम रो ना सुनिथिबे, जहां पर हम डिस्कस करबा मंडी, ई मंडी रो ना सुनिथिबे, जो जगह हमको आईटी को बा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करिया पड़ता है. सो देयर इज रेलेवेंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल सेक्टर इन द एग्रीकल्चर एज वेल.
The next factor is the environmental significance. By environment upare kon impact poduchi agriculture. In today's time period, we are using more fertilizers, we are using more insecticides and pesticides to get maximum yield, to get maximum output. These things have negative impact upon the land itself, upon the soil salinization kuantu, soil contamination kuantu, soil erosion kuantu. All those things are related to agriculture sector. Yeah, so it's a groundwater depletion, groundwater pollution, atmospheric depletion, eutrophication, water scarcity. ये सब जिनस को लीड करुच्ची एग्रीकल्चर सेक्टर बा ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम लैंड गोटे लैंड को हम बारंबार बारंबार ताको यूज करछंती यूटिलाइज करी करी चलछंती देन डेफिनेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट करछि केमती ना से लैंड र फर्टिलिटी कम होछि द न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज हे जाउछि द लैंड रे जो स्पेसीज रहउछंती जो सॉइल एटमॉस्फेयर अछि सॉइल एटमॉस्फेयर नष्ट हे जाउछि सो दीज आर द एनवायरमेंटल इंपैक्ट और द एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ द agriculture sector. The last one is the international significance. International significance. Agriculture mu कहि परिबे this is a field of strategic advancement. पूर्वरु जेंते हम military equipments, arms and ammunitions को importance अधिक दउतले. In the same way, agriculture को वर्तमान in today's time period we can give importance to maintain strategic relations with other countries. हम तो export करछुन agriculture sector को sorry agricultural production को to different countries. Economic significance अछि एतोरा हम forex पाउचंती but apart from that हमें से कंट्री को जदि गोटे फूड इनसिक्योर कंट्री अछि लाइक सहारान एंड सब सहारान कंट्रीज हमें सेठी गोटे गुड रिलेशनशिप एक्जिस्ट करि परिबा सो गोटे रिलेशन हमकु अलगा टाइप रो बायलैटरल रिलेशनशिप कोंतु मल्टीलैटरल रिलेशनशिप सी फोरम रे ग्लोबल फोरम रे हमकु हेल्पफुल करता है जदि 50s रे 60s रे डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए यूके टू हमें अधिक हेल्प पाई परिथांते इन केस ऑफ फूड ग्रेन एक्सपोर्ट ସେମାନେ ଯଦି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଅଧିକ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେ ବି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଇଣ୍ଡିଆ ମନରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ so these are also international significance. Apart from that, there are many international organizations, institutions as well, like World Trade Organization is there, FAO is there. So ये सब एमानकर भी multilateral forum रे global forum रे एमानकर भी importance, impact, application, significance रही या व्यतीत इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस रे आउट टॉपिक ऊपर मु डिस्कस करि परिबी लाइक योर रिसेंट कोविड-19 लाइक जेमति कि ए वायरस गोटे जगह आ गोटे जगह को ट्रांसफर हिची गोटे कंट्री रे वुहान ये आर ओरिजिन जदि हम देखिबा वी कैन ट्रेस इट बैक टू वुहान फ्रॉम वुहान इट वाज स्प्रेडेड टू द एंटायर वर्ल्ड in the same way agricultural production ba agricultural material jahako ame gotte jagar agar jago export korchundi ba transport korchundi that might be a potential carrier for those viruses bacteria or any other type of microorganisms which are responsible to create different type of diseases in the human beings तो ये गोटे पोटेंशियल कैरियर हिसाब रे इन द नियर फ्यूचर आपको यूज करा जाई पारे बा नेगेटिव यूज जाको मु कहबी मे बी फॉर द केमिकल वार बायो वार पई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को एग्रीकल्चरल आउटपुट को यूटिलाइज करा जाई पारे So in today's session, I discussed some relevance of the agriculture sector, how agriculture is important for Indian economy, and apart from that, I discussed some significance of the agriculture sector in the political field, in the social field, economic field, the technological significance, environmental and international significance. I discussed. In the very next class, I will discuss about the distress cycle in the agriculture, and I will discuss about the farmer suicide, genetically modified crops, and other issues which are associated with the agriculture sector. So to subscribe Unacademy Plus हमर complete course continue होची economics by Indian polity by geography by continue होची so those who are not there in the Unacademy Plus they can subscribe to Unacademy Plus by using the referral code EGOS EASYOS कोनोसी प्रकार space न देकी use करंतु referral code description box रे complete information दिया जायछि you can follow me in the Unacademy to get access to more such videos in the YouTube platform Unacademy app रे मध्ये मोर स्पेशल क्लास अछि बहुत ये कंप्लीटली स्पेशल क्लास फ्री रहता है याको पढि परिबे आप रे कंप्लीटली फ्री ले क्विज मध्ये अटेंड करि परिबे या व्यतीत जो माने प्लस रे कोर्स नबा को चाहउचंती दे कैन यूज द रेफरल कोड EGOS so that they will be getting 10% off upon their subscription amount. So thank you everyone, thank you very much, have a good day, see you in the next session. My next session on this agriculture sector is at 3 p.m. today itself.